morning everybody, my most dear students and dedicated colleagues. Today we have assembled here to celebrate the Tigers Day. We all know that national animal of our country is Royal Bengal Tiger, and we are fortunate that we are in West Bengal because the main part where the Royal Bengal Tiger stays, that is in Sundarban area. You know that not only the tiger, the total natural elements are decreasing day by day in our society from our environment. This none other than the human, we are the responsible. So today, thanks to the students, obviously under the guidance of the teachers, Vantika Madam, Sumanto sir, that they have given the message to the society that yes, we have to preserve this. You know the food chain, you know the ecological balance. So the balance of the society, it does not mean that there will be only the concrete, the multi-story building, the computer, the mobile and the human. And there will be a lot of disturbance in our nature. So the balance of the nature will be destroyed. So I request all the teachers, please convey this message to all the students, and all the students please convey this message to your parents that wherever we are, we should take care the most important part of our society, the natural animals. Obviously, there are so many people are there who are behind it to destroy. Government takes lots of initiative for the preservation of the natural animal and especially the tigers. You know that lakhs of people every year visit Sundarban or the different forest, natural forest to visit them. But hardly there are the people who get their contact or who are lucky to see them. Means what? The day by day number of tiger is decreasing. So we have to take care, we have to take an oath that we will not destroy, we will take care the natural animals, and these animals who are in the natural forest, they are totally dependent on us. We as the human being are having lot of responsibility for the natural balance. Because you know, this ecological balance, if it is disturbed, and we are already started to get, at least you have all learned this during this corona period. So I request once again to all my beloved children, please send this message to your parents, to your friends and all the dedicated teachers. Please convey this message to everyone to take care of the natural element. Since today we are celebrating as the National Tiger Day, so we have to take care of the tigers. In addition with that, I want to add that we should take care of our nature and our also the natural animals, whatever is there in our society. Thank you very much. Once again, thank you the student for your fantastic performance, and I hope that a very good message you have given to the society. Thank you everyone. Have a good day. Thank you, sir, for your valuable speech. Now I would like to call Rajendra Mandal of class 6C for a speech. Good morning, everyone. Honorable Chairman, sir, Honorable Vice Chairman, sir, respected Principal, sir, respected Coordinator, madams, teachers, parents, and my dear friends. Today, I here to speak about a topic that is very close to nature. Save tiger. The tiger is not just an animal. It is the national animal of India. With its beautiful stripes and powerful roar, the tiger represents strength, grace, and pride of our country. But today, tigers are in danger due to deforestation, poaching, and human-wildlife conflict. The number of tigers in the world is decreasing day by day. Many years ago, India had lakhs of tigers. Now we have only a few thousands left. We should save tigers because tigers keep the forest healthy. They are at the top of the food chain. If tigers disappear, then deer and other animals will increase
protect tigers and their habitat. Spread awareness. These people that tigers are not our enemies. They will attack when their home is taken away. The tiger is of our India's national heritage. It would be a great shame if our future generation only sees tigers in pictures. Save tigers, save nature, save future. Thank you. Thank you, Rajanya, for your wonderful poem. Next, I would call Anshu Kumari from class 7D to recite a Hindi poem. नमस्कार, मैं अंशु कुमारी कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज बाल दिवस के शुभ अवसर पे मैं सभापति जी, उप सभापति जी, हमारे आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, कोऑर्डिनेटर्स मैडम, हमारे उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत करना चाहती हूँ। आज बाल दिवस के शुभ दिन पर मैं आप सभी के सामने एक सुंदर सा कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है बाघ बचाओ जंगल बचाओ। जंगल का वह राजा कहलाता, दूर दूर तक जिसकी धाक है, पीले जंग पर काली धारियां, वही हमारा प्यारा बाघ है। गर्व से चलता दहाड़ता जब वह, थर थर कांपती धरती सारी। प्रकृति की इस अद्भुत रचना पर दुनिया को जान हमारी प्यारी है, लेकिन स्वार्थ की इस अंधी दुनिया में मानव ने उनका घर छीन लिया। छीन कर जंगल का खुला मैदान उनको पिंजरे के अंधेरे में ढेक दिया। शिकारियों के लालच और धोखे ने उनके वंश को मिटाया है। इंसान की इस क्रूरता ने ही इस सुंदर से जीव को तड़पाया है। अब भी वक्त है, चलो मिलकर बाघ को इस खतरे से बचाए, जंगल को सुरक्षित करें ताकि वे फिर से शान से दहाड़ें। आओ हम सब मिलकर ये संकल्प ले, पर्यावरण का संतुलन बनाएंगे, बाघ को बचाएंगे, जंगल को बचाएंगे और अपनी इस धरती को फिर से महकाएंगे। धन्यवाद। Thank you, Anshu, for reciting it fabulously. Next, we have with us Amita Gorai of class 7C to recite a Bengali poem on Save Tiger. বাঘ বাঁচা জঙ্গলে রাজা সে যে বাঘ, গর্জন শুনে কাঁপে মাঠ, দোড়া কাটা গায়ে তার শান, বনে বনে তার জয়গান। গাছ কেটো না, বন ধ্বংস করো না, বাঘের ভারে কেড়ে নিও না, শিকারি এসে গুলি ছোড়ে, বাঘের সংখ্যা দিনে দিনে কমে। বাঘ থাকলে বন থাকবে, বন থাকলে প্রাণ থাকবে, পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা পাবে, সবুজ পৃথিবী আবার হাসবে। এসো তাই সবাই হাত বাড়ায়, বাঘ বাঁচানোর শপথ নিই। বাঘ থাকুক, বন থাকুক, পৃথিবী সুন্দর থাকুক। নমস্কার। Thank you, Amita, to recite it so amazingly. Now, I would like to call Arshi Kumari from class 7D to recite a poem. नमस्कार आदरणीय सभापति जी, उप सभापति जी, प्रधानाचार्य महोदय, कोऑर्डिनेटर मैडम और यहाँ पर उपस्थित सारे शिक्षकगण और मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह कविता बाघ बचाओ के ऊपर आधारित है। जंगल का वह राजा है जिसकी दहाड़ से कांपती धारा है, काली धारियाँ, पीली बदन की चमक, प्रकृति की अनमोल धरोहर और धमक, सदियों से भारत की शान बढ़ाता, हरियाली में छिपकर अपना दम दिखलाता, प्रकृति का है रक्षक, शिकारियों के लिए बना भक्षक। पर आज इन पर संकट है भारी, इंसानों ने फैलाई कैसी यह लाचारी, कट रहे जंगल, छिन गया बसेरा, विलुप्त होने लगा इनका यह बसेरा। वन संपदन की यह सुंदर जान, बचा लो इनको, यह है राष्ट्र की शान। आओ मिलकर संकल्प ये उठाएं, जंगल के राजा को बचाएं। धन्यवाद। Thank you, Arushi, for giving us a wonderful recitation. Now, I would like to call group dancers of class 6 and class 7 for a dance performance. Class 7 students are Samriddhi Kundu, Srijita Goswami, Arohi Ghosh and Arya Chattopadhyay. Class 6 students Shritamani
কালো দাগওয়ালা একটা হলুদ বিড়াল। বাবা বাবা আমরা কোন দেশে থাকি? সবথেকে বড় মহাদেশ এশিয়াতে। কোথায় আমাদের ঘর? এই বিশাল জঙ্গলেতে। কারা আমাদের আপনজন? আমরা হলাম নপ্রকার, আমাদের মতো শক্তিশালী কেউ আর নেই, কিন্তু আমাদের তিনটি প্রজাতি আর এখন নেই। বাঘ মশাই দেখুন এদিকে, রেগে গিয়ে গর্জন করে যাচ্ছেন কোন দিকে? আপনি হলেন জাতীয় পশু আমাদের দেশের, আপনার রক্ষা আমরা করব আজ থেকে। তন্দনা 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 सीधी सादी ये खुशियाँ। तंदना 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 तेरी मेरी ये दुनिया। पूछ तेरी प्यारी है, मूछ तेरी न्यारी है, काली काली धारी है, थोड़ा थोड़ा झील रे। ভয় ভয় বেঁচে আছি, হাতে নিয়ে ভূত ধরার কল। আগে কখনো ভাবিনি এরা এত লজিকে দুর্বল। আশা ছাড়ি না, তবু কাউকে কিছু আমি বোঝাতে পারি না। বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও। Thank you, the group dancers of the dance, for a superb performance. A heartfelt thanks to our Honorable Chairman Sir, Honorable Vice Chairman Sir, respected Principal Sir, respected Coordinator Madams, teachers, parents, and my dear friends. Thanks